ओके, तो कल जैसा मैं बोल रहा था कि फीचर्स ऑफ मॉडर्निज़म के क्या क्या फीचर्स हैं, या मॉडर्न ड्रामा के क्या क्या फीचर्स हैं रादर। तो उसमें पहला जो पॉइंट बोला था वो क्या था, निर्जला टाइप करो। What was I talking about? What was the first point that we were discussing? हाँ, तो मैंने जो बताया था वही तो पूछ रहा हूँ। अभिनव, तुमको याद है कि पहला पॉइंट मैंने कल क्या बताया था अबाउट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा और फीचर्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर? कल ही तो बताया था। हाँ सर, वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल के डिफरेंस के बारे में आप बता रहे थे कुछ। हाँ, मॉडर्न क्या बता रहा था? पहला पॉइंट मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि पॉइंट्स मतलब फीचर्स ऑफ मॉडर्निज्म क्या हैं, या फीचर्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, या फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा क्या है। तो पहला एक पॉइंट बताया था। क्या तुमने लिखा था वो पॉइंट? अगर लिखे होते तो इतना देर नहीं लगता तुमको बोलने में। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको लिख लो। तुम लोग विद्यासागर नहीं हो कि एक बार मैं बोलूँगा और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। हैव यू रिटन एनीथिंग, अभिनव? नो सर। हाँ, तो क्या मतलब ऐसे ही फालतू का बोलता रहता हूँ? Tanya, what was the first point that I told about features of modern drama or features of modern literature? सर, ट्रेडिशनल फॉर्म्स के बारे में या इंडिविजुअलिटी के बारे में कुछ बता रहे थे, कैसे वो अलग है। क्या ट्रेडिशन ऐसे के बारे में क्या बोल रहा था? कम अगेन। ट्रेडिशनल फॉर्म्स वो सब कैसे अलग है आज के मॉडर्न पीरियड से। So regarding the experiment what we have done in the modern literature, you have told us. Yes. So the first point regarding features of modern literature is that it is experimental in nature. एक्सपेरिमेंट होता है लैंग्वेज में, थीम में, स्टाइल में। देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन. Okay, and yes, I was giving an introduction as to how or what is traditional and what is modern, what is the difference between tradition and modernity or modernism. I was trying to define modern in a general sense of the term. So the second thing about modern literature, or the second thing about modern drama, is that it is more about now it's about the theme क्या है. स्टाइल में एक्सपेरिमेंटेशन है, लैंग्वेज में है, बट इट्स देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस ऑफ थीम. पहले के जो प्लेज थे, they were mostly about the kings and the queens or the rich people, the aristocratic people. But now the insistence, now the focus is on the common people. जितने भी कॉमन एवरीडे पीपल हैं, उनके ज़िंदगी के ऊपर ड्रामा बनने लगा, उनके ज़िंदगी को लेकर प्ले होने लगा. जैसे आम से लुक बैक इन एंगर इज़ अबाउट जिमी पॉटर, एलिसन, क्लिफ, हेलेन.
Helena. So these people are not kings and queens or aristocratic people or warriors. These people are very common people, everyday people like you and me. Jimmy Potter is a university graduate, but he takes care of a sweet shop. उसका ऑक्यूपेशन है मिठाई का दुकान चलाना. ये ऐसा कैसा हीरो हो सकता है जो मिठाई का दुकान में बैठता हो, है ना? सो बट दैट इज़ व्हाट आवर रियलिटी टुडे इज़. हमारा रियलिटी आज जैसा है वैसा ही हम मॉडर्न थिएटर में, मॉडर्न प्लेज में देखते हैं. ठीक है. However, we should not confuse modern English modern theater with the kind of entertainment or with the kind of web series or once upon a time very popular daily serials. क्योंकि हमने डेली सीरियल्स में देखा है हिंदी इंग्लिश हिंदी और बांग्ला दोनों में ही ये टेंडेंसी देखा है कि दे टॉक अबाउट वेरी रिच पीपल. They are not talking about common people. They are talking about they are showing big businessmen, big businesswomen, and whatever is going on in their house. If you remember, or if you know, if you have heard of क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कहानी घर घर की, और what's that stupid serial's name, which had this person called Komolika. I don't remember the name of these things, but they were always about rich people. So you can say that even they are modern. क्योंकि first point जो मैंने बोला था वो ये था कि modern drama must have been written in the which century. अभिनव, और कोई नहीं बोलेगा, अभिनव बोलो. मॉडर्न ड्रामा कौन से सेंचुरी में लिखा जाना चाहिए तभी उसको हम मॉडर्न ड्रामा कह सकते हैं. हालांकि मैंने ये भी बोला था इट डज़ नॉट मैटर कि वो कौन से सेंचुरी में लिखा गया है, लेकिन मोटे तौर पे ऐसा लोग समझते हैं कि ठीक है, कौन सा मतलब अगर इस टाइम में लिखा गया है तो हो सकता है ये मॉडर्न हो. When did the modern age begin? अभिनव, आज भी लिख रहे हो कि ऐसे ही मतलब हवा में जा रहा है सब? Late 19th century. What do you mean by 19th century? 19th century means what date? कोई डेट तो होगा. हाँ, 1800s, right. But as I said, Tania, when did the modern age begin? 1870. How? Where did you find this? Nirjala, you can type. I don't know if you were there in the class from the very beginning, but I told you something important about the the beginning of the modern age, modern literary age. 19th century, 1800 to 1900. ये कौन सा एज चल रहा था? 1801. Tanya, where did you get this year 1870? What happened in 1870? Why is 1870? You mean to say? Huh? So does that mean that in 1879 the modern age had begun?
Doll's House is that core shift has started. Like the theme has been started. Writers have started focusing on realism rather than realistic stories, I guess. okay. So realism is one aspect of modernism, but even then, when you're talking about Doll's House, what age was it? Like in terms of books of English literature, in terms of history of. Victorian? Yes, Victorian, not modern. So when did the modern age start? I told you last class also. A specific event, a specific date. Make a habit of taking notes. Otherwise, these things will slip your mind. Abhinav, why is the Victorian age known as the Victorian age? विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं? अभिनव, यस सर. विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं? तानिया, रिलेटेड टू क्वीन विक्टोरिया, कैसा रिलेशन है? भाई है, बहन है, रिलेशन क्या है? दिस वेग आंसर विल नॉट डू. So it is named after Queen Victoria. Yes, it is named after Queen Victoria, and if Queen Victoria is still ruling, then it cannot be any other age, right? I told you last class that Queen Victoria died, I think, in 1900 or 1901, and George the Fourth ascended the throne from 1901 to 1911. This period was called the Edwardian Age, but some scholars or critics imagine that the Edwardian age is actually a part of the modern age. So technically, modern age began from the 1900s. That is 20th century, not 19th century. 1900 से शुरू हुआ modern age. However, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तब तक पुरानी चीज़ें ही कंटिन्यू हो रही थी बहुत हद तक. लेकिन द न्यू सेंसिबिलिटीज़, एज तानिया पॉइंटेड आउट, द न्यू सेंसिबिलिटीज़ had already come. Realism, showing the lives of the common people, because again Doll's House is about common people. But remember, okay, who is the writer of Doll's House, Tanya? Henrik. Does he have a surname? Oh yes, Henrik Ibsen. Ibsen, not son, sen. Henrik Ibsen. No, that's okay. So Henrik Ibsen belonged to which country? Was he an English playwright? Because we are talking about history of English literature. Norway, right. So he was a Norwegian and not English playwright. So even if you consider Doll's House to be one of the prototypes of modern plays, which it is also known as a problem play. But the modern age in English literature is traditionally believed, usually believed to have started from the 1900s, 1900. Okay. Now, so the first point, that it should be, if you want to consider a play to be a modern play, then it should be written after the 1900s, one. But as I said, that you cannot have these watertight compartments where you neatly put one age within a particular bracket, because
all these ages are basically tendencies, styles of writing, styles of seeing things, perspectives, POV. So something could have been written much earlier could still be considered as modern, but not strictly modern literature with a capital M. Okay, anything can be modern, but to become modern literature you should have written, you should have published after the 1900s. Okay, that's one. Secondly, there will be a lot of experimentation in terms of language, style, direction, narration. Third, it will be talking about common people. It will be discussing the lives of commoners. Okay. um, Third and more interesting thing about modern drama or modern literature is, and I hope you are writing these things down, এগুলো উইকিপিডিয়া বা অন্য জায়গাতেও মানে দেওয়া থাকবে, কিন্তু তোমরা যদি নিজের হাতে নিজের মতন করে তোমাদের খাতায় লেখো তাহলে এটা তোমার মনে রাখতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? So, interestingly, these modern plays, these modern drama, uh, I mean, that's how Doll's House is a little different. Modern play is practically devoid of any kind of plot. মডার্ন প্লেগুলোতে সাধারণত কোনো প্লটই থাকে না। निर्जला, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्लॉट? अभी भी बस में हो कि बस से उतरी हो? If you are in the bus, you may not be able to talk. Okay, Tanya, what is plot? What do you understand by plot? For the events, like the background stories, I guess. Background story is background story, but you said right, you pointed out rightly that events. Series or events, like, yes, sir. Yes, series of events, sequence of events. अभिनव, तुमने धुरंधर 2 देखा है? अभिनव, यस सर। धुरंधर 2 देखा है? हाँ। उसका प्लॉट बताओ। बिग फैन ऑफ whom? आदित्य धर और रणवीर सिंह? Anyway, tell me the plots of Dhurandhar 2 or Dhurandhar 1, whatever. I mean, they are the same thing, they're the same movies. So, what is the basic plot of Dhurandhar? Anyone? Tanya? And how he is defeating Karachi, like the main motive of the spy. उसने कैसे जा गया, पाकिस्तान का रियलिटी भी दिखाया, सेव किया कितने सारे इवेंट्स को। हाँ, तो मेन बात ये है कि कहानी ये है कि वो जसकीरत जो है वो किस तरीके से पाकिस्तानी माफिया को इन्फिल्ट्रेट करता है और किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में घुसता है और किस तरीके से अंदर से पाकिस्तान को बर्बाद करता है. दैट इज़ द स्टोरी. बट देयर इज़ एन इवेंट ऑफ there are a number of events. Yes, Jamil Jamali was like the prototype of Dhurandhar, and there are events one after another, related, connected. वो जो बाद में जो आया जिसने ये बात बोला कि तुझे घर की याद नहीं आई, जस्सी, if he had his best friend, हाँ उसका बेस्ट फ्रेंड, जस्सी का हाँ बेस्ट फ्रेंड, हाँ जस्सी का बेस्ट फ्रेंड. लेकिन जस्सी का बेस्ट फ्रेंड का अगर वो स्टोरी नहीं दिखाते पहले कि वो एक साथ जा रहे हैं, बंदूक खरीद रहे हैं और कोरिलेट एवरीथिंग, यस करके दिखा. यस,
So if these things are not in a sequence, then we will not be able to understand what is going on. जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में होता है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में वो सीक्वेंस भी नहीं होता है जो मिनिमम मॉडर्न लिटरेचर में तो है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, लेकिन इट इज़ नॉट ए टिपिकल प्रॉपर प्लॉट दैट ट्रेडिशनल और नॉन मॉडर्न लिटरेचर हैड अर्लियर. नॉन मॉडर्न लिटरेचर के लिए एक पर्टिकुलर नाम है जो तुम लोग लिख लो, मैं पूछूंगा बाद में, और नहीं बताओगे तो फिर गाली दूंगा तुम लोगों को. क्लासिक रियलिस्ट. क्लासिक रियलिस्ट. मॉडर्न टेक्स्ट जिस तरीके से नाम कह सकते हैं, उसी तरीके से क्लासिक रियलिस्ट टेक्स्ट. तो जो नॉन मॉडर्न टेक्स्ट्स हैं, as opposed to non-modern texts like Doll's House can be called a classic realist text, not a modern text per se, but a classic realist text, क्योंकि ये तुमने realism के बारे में जो बोला, ठीक है. Next point, so I was saying that there is no plot. तो look back in anger में कोई plot नहीं है, जैसा importance of being earnest में एक plot है कि एक इंट्रीग है, एक कहानी है, एक के बाद एक चीज़ होती हैं, लेकिन लुक बैक इन एंगर या फिर चेरी ऑर्चर्ड जो तुम लोग 6th सेम में जाके पढ़ोगे, उसमें कोई प्लॉट ही नहीं है. दे आर जस्ट टू पीपल आर टॉकिंग, 3 पीपल आर टॉकिंग, दे आर इन अ रूम एंड वी नो अ लिटिल बिट अबाउट देयर लाइव्स फ्रॉम वट एवर दे टेल अस. They fight, then they make up, then somebody leaves, the wife leaves and her friend stays with the husband, and then she comes back and the friend leaves, so on and so forth. इसका कोई कहानी नहीं है. There is no plot, there is hardly a story, and the chain of events do not lead to anywhere. तो जिससे हम ये पता कर सकते हैं, या जिससे हम मॉडर्न लिटरेचर के बारे में ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर इज ओपन एंडेड. ओपन एंडेड. ओपन एंडेड मतलब इसका कोई अंत नहीं है. इट इज़ नॉट कंप्लीट. अनलाइक many classic realist texts, modern texts do not really have any ending. Same for Look Back in Anger. Okay, same for Roots, or same for another play by John Osborne, Deja Vu, or so many other movies like that. So many other plays like that which are modern, and thus they do not have any kind of end to them. The same is true for novels, the same is true for short stories, especially for short stories, क्योंकि short story एक ऐसा genre है जो particularly modern age में ही develop किया. Okay, anyway, next point about modern literature or modern drama, modern poetry is that it is realistic. There is realism in it. Now, realism with the capital R is actually a movement, a style of writing, and it existed before modernism. क्योंकि विक्टोरियन एज में जब नॉवेल्स बहुत सारे लिखे जाने लगे, तो उनका जो स्टाइल था, जैसे चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टन, शार्लट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, मैरी एन इवेंस, ये सभी जो नॉवेल्स लिखते थे वो उनका स्टाइल वाज ऑलवेज रियलिस्टिक. इट वाज यूजुअली रियलिस्टिक. बट
मॉडर्निज्म में ये रियलिज्म और ज़्यादा उभर के आया. It was there was another school, there was another movement called naturalism also, with the capital N for nest, naturalism. तो ये नेचुरलिज्म ऐसा था कि जैसा लाइफ में है वैसा ही दिखाया जाता था, विच इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म. So realism is also a point or a feature of modernism. Okay. Next feature of modernism, or one of the another feature of modernism, is that it is, I mean, there are two tendencies that developed in modernism. Yes, naturalism is something that can be associated more with modernism, because realism with the capital R was there even before modernism in the novels of Charles Dickens, Jane Austen, and other writers like that. Okay. So, uh, another feature of modernism are um, two movements or two ideas. So, first idea is absurdism. Absurd theatre. In your sixth semester, you will be reading a play called Waiting for Godot, which is an absurd theatre. Absurd theatre means absurd. The word absurd means something that makes no sense. আমরা অনেক সময় বলি না অ্যাবসার্ড কথাবার্তা বলছে, যেমন অনেক পলিটিশিয়ানরা এখন বলছে যা মুখে আসছে তাই বলে দিচ্ছে, কোনো মাথা মুন্ডু নেই, কোনো মিনিং নেই. সো absurd is a kind of a theater where certain things are shown which makes no sense. Then you will argue that why should we go to the theater to see such things? Well, because it is a reflection of our meaningless lives. But of course, এই যে এক্সপেরিমেন্টেশনগুলো রাইটার্সরা করছিল উইথ লিটারারি ফর্মস অ্যান্ড উইথ নভেল, পোয়েট্রি, ড্রামা, এটার জন্য আর একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল, দ্যাট modern literature had become increasingly difficult to understand. মানে অনেক সময় আমরা এটা রিয়েলাইজ করব যে মডার্ন লিটারেচার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু read or study. Why? Because there is so much experimentations. There is this idea called absurd which does not make any sense. Then and then there is something else as well along with this kind of absurdism, which you do not need to know right now. Karon Look Back in Anger is not an absurd play. But another thing that came up, another idea that was circulating, that was trending in the modern age, in modern literature, is called existentialism. So I will write these two words down for your benefit. Absurdism, existentialism. Absurdism was shown in the Victorian age also. Where? That I'm asking, I'm not sure. No, absurdism was not there in the Victorian era. It rather came into the scene after the First World War. কারণ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গোটা ইউরোপে এত, মানে ওয়ারের জন্য এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, এত ডিস্ট্রাকশন হয়েছিল, দ্যাট এন্টায়ার লাইফ হ্যাড বিকাম মিনিংলেস. এই একটা মানুষ বেঁচে আছে, এই তার উপর একটা বোম পড়লো আর সে মারা গেল.
there was no certainty of anything. The entire world, I mean the entire Europe, had lost whatever meaning was there left. So that is why absurdism came out as a way of expression, as a way of literature, as a way of artistic expression. But in Victorian era, now no such uh, dangerous event took place that would shake the entire, that would destroy the entire sense of meaning. তো মানে এরকম হতে পারে যে কোনো একটা টেক্সট যেটা ভিক্টোরিয়ান এজে লেখা হয়েছিল, যেটার ব্যাপারে আমরা এখনো জানি না, সেটা হয়তো অ্যাবসার্ড ছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রাইটার হয়তো ওরকম করে কিছু লিখেছিল। যেমন 1780s, 1780s তখন রোম্যান্টিক এজও শুরু হয়নি, একজন রাইটার ছিল, তার নাম ছিল লরেন্স স্টার্ন। সে একটা নভেল লিখলো হঠাৎ করে, তার নাম হচ্ছে ট্রিস্টম শ্যান্ডি। নামটা এইটুকু নয়, অনেক বড় নাম, বাট উই নো দ্য নভেল অ্যাজ ট্রিস্টম শ্যান্ডি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাবসার্ড নভেল। হঠাৎ করে মাঝখানে, মানে প্রিন্টেড যে নভেলটা, হঠাৎ করে মাঝখানে কয়েকটা পাতা গায়েব, গায়েব মানে সাদা, কিছু লেখা নেই। হঠাৎ হঠাৎ করে টাইম, প্লেস, ক্যারেক্টার্স বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে রয়েছে, তার পরের মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে চাঁদে চলে গেছে, এরকম একটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার। বাট দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ওয়ান অফ আ কাইন্ড। মানে এরকম আর কোনো টেক্সট ভিক্টোরিয়ান এজ, রোম্যান্টিক এজে বা ভিক্টোরিয়ান এজে ছিল কি না সেটা জানা নেই। মানে আই ডোন্ট নো, ইউ মে ফাইন্ড আউট দ্যাট দেয়ার কুড বি, or this could be your research topic, like absurd theatre or absurd novel or absurdity or absurdism in Victorian literature. You can try to find out, you can try to write an article on it. But as far as my limited knowledge goes, I will not say that there was much of absurdism in the Victorian theatre or the Victorian age. এমনিও ভিক্টোরিয়ান এজে থিয়েটার অত ভালো চলেনি, কিন্তু মডার্ন এজে থিয়েটার ভালো চলছিল। দেয়ার ওয়্যার লাইক আ নাম্বার অফ প্লেস উইচ ওয়্যার মেকিং মানি, ঠিক আছে। There was a revival of theatre in the modern age, which can again be considered a feature of modern literature, that instead of just people were not just reading novels, but they were also going to the theaters. But another thing, another important thing happened, that people started reading drama. Drama which was supposed to be staged on a theater, staged in a theater, was now just read. পড়ার মতন করে লোকে পড়ছিল। যেমন তোমরা তোমরা যে কটা ড্রামা পড়েছো বা এখন পড়ছো বা আগে পড়বে, কোনোটাই তোমরা স্টেজে গিয়ে দেখবে না। আর স্টেজে গিয়ে ড্রামা না দেখলে সেটার 50% মিনিংটাই লস্ট হয়ে যায়। মানে আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি সেটাতে তো আরোই কিছু নয়। ইভেন ইফ উই কুড হ্যাভ হ্যাড গন লাইন বাই লাইন, তাহলে কিছু একটা হয়তো তোমাদের উপলব্ধি হতো, ইউ কুড হ্যাভ হ্যাড আন্ডারস্টুড সামথিং। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক লিটারেচার টট in a semester system-এ ড্রামাটাকে ওইভাবে পড়ানো যেতে পারে। The best thing that I can do is like just point you towards some important passages in the drama which you can read and which you can quote in your answers, and that's it. যাই হোক, সো আর একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করবে, মডার্ন ড্রামা যত পড়বে সেখানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজটা তো এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে বলেওছি, বাট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কোলোকিউয়াল। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এভরিডে ডিসকাশন। মানে ধরো আমরা যেমনভাবে কথা বলি, সেই কথাগুলো এখানে ব্যবহার করা হয়, ইনক্লুডিং সাম কাইন্ড অফ ব্যাড ওয়ার্ডস অলসো। যেমন লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারেই জিমি পটার অ্যালিসনের কোনো একটা বান্ধবীকে বলছে যে শি ইজ আ স্টুপিড বিচ। তো এই যে কথাটা, এটা মানে এটা গালাগাল, কিন্তু এটা আমরা সাধারণত আমাদের ডেলি ডিসকাশনস বা ডেলি
কথাবার্তার মধ্যে এরকম আমরা গালাগাল দিয়ে থাকি। ইটস এ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। ইয়েস, ইট মেক্স ইট মোর রিয়েলিস্টিক, ডেফিনেটলি, ভেরি কারেক্ট। যদি এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজটা না থাকে তাহলে তো আমরা রিলেট করতে পারবো না। তাই জন্য দেখবে ওই যে ডেলি সিরিয়ালস যেগুলো মানে আমরা দেখতাম আগে, এখনও হয়, বাট ওটার ক্রেজটা চলে গেছে ওয়েব সিরিজ আসার পর থেকে, আর ওয়েব সিরিজে গালাগাল ভর্তি থাকে। আগে ওই যে সিরিয়ালগুলোর ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি তুমি দেখো, তাহলে ওরা সবসময় একটু সফিস্টিকেটেড সোবার ওয়েতে কথা বলছে। মানে ইম্যাজিন তুলসী in kabhi saas bhi kabhi bahu thi to call her mother in law a bitch. That would have been like either very comical or it would have been very real. কিন্তু ওই সিরিয়ালগুলো রিয়েল ছিল না। মডার্নিজম হ্যাড নট ইয়েট টেকেন প্লেস ইন দ্য একতা কাপুর সিরিয়ালস। তার আগে মডার্ন ছিল সিরিয়ালসগুলো। সাম সিরিয়ালস লাইক I mean, I think the first daily serial was named. They used to have like 13 episodes. Hum Log or Bunyad. I mean, even your parents might not have heard of these names. Maybe your parents have because they might be of my own age or a little older. তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো যে তারা কোনো দিনও এই সিরিয়ালগুলো দেখেছে কিনা, বুনিয়াদ, হামলোগ, নুক্কড়, এই ধরনের সিরিয়ালসগুলো দেখেছে কিনা, দে ওয়ার ভেরি রিয়েলিস্টিক। অফিস দে ওয়ার ভেরি রিয়েলিস্টিক। কিন্তু এই এখন এই একতা কাপুরের যে সিরিয়ালগুলো আমরা দেখেছিলাম বা এখন যে বাংলা সিরিয়ালগুলো হয়, দে হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ রিয়েলিজম। একটা মানুষের 5 বার করে বিয়ে হয়, 2 বার প্লাস্টিক সার্জারি হয়, 3 বার তারা মরে যায়। কি ভাই এটা? দিস ইজ নট হোয়াট মডার্ন ড্রামা ইজ অ্যাবাউট এনিওয়ে। সো মডার্ন ড্রামা, মডার্ন লিটারেচারের এই ফিচার্সগুলো এক্সিস্ট করে। অ্যান্ড when you read Look Back in Anger, when you read the text, you will see that these features are easily identifiable. Language, setting, ক্যারেক্টার্স, প্লট, এক্সপেরিমেন্ট, এগুলো সবই তোমরা দেখতে পাবে যে ওই মডার্ন মানে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে কীভাবে আসছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে a little bit about John Osborne. Now, John Osborne has created a particular kind of character known as angry young man. Maybe you are familiar with this term angry young man. আমাদের দেশে angry young man কে ছিল? Can anybody tell me? The name angry young man was yes, अरे पूरा नाम है अमिताभ बच्चन, right? Why was he known as the angry young man? What did he do? Dawn, no, in Dawn he was not an angry young man, no. Dawn is different. Trishul, Kuli, I guess, yes, Namakharam also, Shan. These were, no, I mean, particularly Trishul, maybe Namakharam, Mukaddar Ka Sikandar, even Sholay. ওইখানে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ইয়াং ম্যানকে দেখানো হয়েছিল হু ইজ অলওয়েজ অ্যাংরি। ওয়াই ওয়াজ হি অ্যাংরি? স্নেহা, অমিতাভ বচ্চনের থেকে তো বেশি অ্যাংরি ওর ওয়াইফ থাকে, জয়া বচ্চন। সো ইজ অমিতাভ বচ্চন রিয়েলি অ্যাংরি অর ওয়্যার দ্য ক্যারেক্টার্স portrayed by Amitabh Bachchan in these movies? You might have heard of these movies if you have not seen, but why was Amitabh Bachchan angry? Why were Vijay Dinanath Chauhan in Agnipath angry? কি এমন হয়েছিল? What makes you angry, Sneha, other than me? God knows, but in Sholay movie his character was
kind of funny and gentle. Have you seen the movie, Sneha? Was he funny? Funny, yes, to some extent. I mean, in some scenes he was funny. Gentle with whom? Gentle with Gabbar Singh? Huh? सर, इट शोज यूथ का एनर्जी, लाइक वो जब कुछ गलत होता था तब बहुत गुस्सा करता था. यस, यस, वेरी करेक्ट. बट what else was there? गलत होता था, गुस्सा करते थे, and that way they were like protesting any kind of problems. That was angry, that was an expression of anger. But what was the real reason of anger? कौन थे ये लोग? ये दीवार में ये अमिताभ बच्चन कौन था? और who was अमिताभ बच्चन in शोले? What was his occupation? सर शोले में ही was जेल में था वो. हाँ, जेल में था. क्राइम किया हुआ था. यस, क्राइम किया हुआ था. क्राइम किया था. And Nirjala says angry and frustrated against society. सोसाइटी ने उनकी माँ बहन एक करके रखी थी, या बाप भाई एक करके रखा पापा का डेथ हो या कुछ भी हो, तो जैसे शोले में उसके फ्रेंड के डेथ पे वो बहुत भड़का था. Yes. No, in Sholay the death comes later, but we see that these young men are not getting jobs, proper jobs, the jobs that they deserve. जैसे तुम लोगों को लगता होगा कि अरे यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं. रोटी कपड़ा मकान was the main. Exactly, रोटी कपड़ा मकान was denied. बट रोटी कपड़ा मकान फिर भी लग रहा, फिर भी मिल रहा था लोगों को. बट द काइंड ऑफ रोटी कपड़ा मकान दैट दे डिजर्व्ड वाज एब्सेंट. क्यों? क्योंकि वो जो क्लास सिस्टम था, यस, बड़े अमीर लोग जो थे वो सब खा ले रहे थे. इन द 1970s when the angry young man phenomenon came, the India was as it is today, but we do not have angry young men anymore. India was completely corrupt. हर जगह करप्शन अभी भी है, तब भी था. अभी हम लोग को आदत हो गया, अभी हम लोग भी करप्ट हो गए हैं कि हाँ ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं तुमको अटेंडेंस दे दूँगा. Instead of getting angry at you that why aren't you doing your classes, if I take money and give you attendance, then there is no reason for you to get angry or me to get angry, right? So that is what is happening today. That's why there is no good cause left to fight for. That is what, yes. And who said that? Not, don't say Jogi. So it is, yes, thank you, Sneha. You know better than many politicians. So the thing is, John Osborne himself was an angry young man because he was frustrated with the society. इतने पढ़े लिखे लोग थे लेकिन उनको जॉब वॉब कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वॉर ने इकोनॉमी की बजा रखी थी. And that is who John Osborne is, and Jimmy Potter is kind of an autobiographical character. ठीक है, जॉन ऑसबॉर्न का. So John Osborne is one of the university graduates, kind of a university wit, you can say, very well educated. लेकिन he chose the profession of writing, and writing में उसको ज़्यादा उतना पैसा वैसा कुछ मिलता नहीं था, and he was really very angry, and he creates this character called Jimmy Potter, who is a reflection of the author himself. तब के ज़माने के राइटर्स भी ऐसे ही थे, थोड़े से एंग्री टाइप के थे, क्योंकि उनको सोसाइटी से वो नहीं मिल रहा था जो जिसको वो डिज़र्व करते थे, and that is what made them angry. And they were always satirizing, or they were always talking against the ills of the society: corruption, apathy, political problems. सोसाइटी में जो कुछ भी बुरा चल रहा था उसके खिलाफ ये राइटर्स बोलते थे, इंक्लूडिंग
जॉन ऑसबॉर्न, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, विवेकानंद थे या राम मोहन रॉय थे, बट दे वेर ऑलवेज टॉकिंग अगेंस्ट वट एवर वॉज गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी. Okay, so let us stop here today. We will maybe we have classes tomorrow as well. Follow the routine. There will be only one link that I gave already. Pin it, write it down somewhere, use the same link for all the classes in the routine. My classes, TNSers classes, TNSers link, my classes, my link. Okay, all right, you may leave the meeting now.